So, friends, how are you? Hope you are good. And let me just make some correction here. तब तक आप लोग अपनी कमर कस के तैयार हो जाइए. कमर कसने का क्यों हम बोलते हैं पता नहीं. कमर कसने की बात क्यों बोली जाती है ये तो आइडिया नहीं है. लेकिन आजकल तो लोग बेल्ट पहनते हैं, तो फिर भी कमर कसने की बात होती है, तो आप कमर कस के तैयार हो जाइए. ये क्विज है. इस क्विज में अगर आप जीतेंगे तो आप पा सकते हैं फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़. सो आर यू गाइज रेडी? एंड आपको मैं फटाफट इस गेम के रूल बता देता हूँ. इस गेम में हमारे गेम में 4 सवाल होंगे, 4 राउंड्स होंगे. हर राउंड में आपको सबसे पहले सही जवाब देना है. बेसिकली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. वी फॉलो द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मेथड where the first answer, first correct and complete answer wins this particular quiz. In the end, we will compile all the winners and जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा सही जवाब देंगे वो उस क्विज को जीत जाएगा और ये फ्री ऑरेकल रीडिंग का हकदार होगा. फ्री ऑरेकल रीडिंग से आपके जितने भी जो पर्सनल या करियर रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो सारे आंसर हो जाएंगे. दिस इज़ वर्थ 400 रुपीज़ और $5. सो डोंट मिस आउट. प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस क्विज. वेरी शॉर्ट क्विज, वेरी इंटरेस्टिंग. और अब में देख सकते हैं कि 11 लोगों ने अभी लकी ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट किया है. तो अगर आप में से किसी ने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, this is a time for you to participate in the lucky draw. Type exclamation followed by join and our system will take you in. This is a completely system driven contest and this contest is also open. Both contests at this point are open, which is quiz, which is going to start now, as well as the lucky draw. All right. मैंने सारे रूल हिंदी और इंग्लिश में बता दिए हैं. किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड प्रिया अरोरा इज सेइंग यस, कमर कस ली है प्रिया अरोरा ने और बेल्ट कस ली है. 2024 में वी शुड से इंस्टेड ऑफ कमर लेट्स टाइटन आवर बेल्ट. ओके, सो यू गाइज आर रेडी? ठीक है. वैष्णवी, आपने एक्सक्लेमेशन भूल गए हैं अपने जॉइन के सामने. प्लीज करेक्ट दैट एक्सक्लेमेशन, उसके बाद जॉइन टैप करें और उसको भेजें. ऑल राइट, सब तैयार हैं और जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे उसी सीक्वेंस में हम दिखाएंगे सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. आपको सबसे पहले सही जवाब देना है. आपका जवाब कंप्लीट होना चाहिए और सही भी होना चाहिए और सबसे पहले भी होना चाहिए. तो दिस इज अ गेम ऑफ क्विकनेस, नॉट सो मच अबाउट द हार्डनेस ऑफ द क्वेश्चन. ऑल राइट, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन. इन द ईयर 1547 who was made the king of England, crowned following the death of his father Henry the 8th. 1547 में किसको इंग्लैंड का राजा बनाया गया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था हेनरी द 8th. बेसिकली हेनरी द 8th के लड़के का नाम बताना है 1547 में जिनको राजा बनाया गया. मेक श्योर योर आंसर इज कंप्लीट, बिकॉज आधा आंसर होंगे तो जिसने कंप्लीट आंसर दिया होगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा. तो इस चीज का ध्यान रखें. टेक योर टाइम, नो हरी. 1547, who was made the king of England following the death of his father Henry the 8th? All right, first answer is from Priya Arora. प्रिया अरोरा, आपका नाम स्क्रीन पे है. एडवर्ड द सिक्स्थ. प्रिया अरोरा सेज एडवर्ड द सिक्स्थ. दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज आप देख सकते हैं अगर आप ऑरेकल इसको क्विज को जीतते हैं तो आप पाएंगे ऑरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़. डोंट मिस आउट ऑन दिस. This is also a nice trivia for you to learn. Okay, so Priya Arora is giving more information. Priya Arora, you're talking names like Mary, Elizabeth.
and Edward III. Edward's three child. I am not sure what you're trying to say, Priya Arora. To to best of my knowledge, Mary and Elizabeth the First, they were all sisters of this gentleman who we want to get the answer for. All right. Vaishnavi Pandey says Edward the Sixth. Sonia Gandhi says Edward the Sixth. आप दोनों के नाम स्क्रीन पे दिखा दिए गए हैं. Let's go to Priya Arora. She was the first one to answer. Let's see if this answer is correct. Edward the Sixth. Priya Arora, your answer is absolutely right. Edward the Sixth is the answer. Edward the Sixth became the king when he was merely 9 years old, and he died when he was only 14 years old. And after that, the entire chaos unleashed, because the next king after Edward the Sixth was a big question mark. A lot of history behind it. We will not go in depth on this history. However, Priya Arora has won the first round. Let's go to the next one. In the year 1947, who was appointed the last Viceroy of India to oversee the move of independence? 1947 में किस इंसान को इंडिया का लास्ट वाइसरॉय बनाया गया टू मेक श्योर कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज ग्रांटेड और ट्रांजिशन फ्रॉम यूके टू इंडिया? 1947 में किस इंसान को वाइसरॉय बनाया गया इंडिया का टू ओवरसी द मूव ट्रांजिशन ऑफ पावर आफ्टर इंडिपेंडेंस? इसका आंसर जल्दी से देना. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर इनका आप पूरा नाम बताएंगे तो आपको क्रेडिट मिल सकता है. अगर आप आधा भी बताएंगे और किसी और ने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पूरा नाम बताया है तो आपको क्रेडिट मिल सकता है. All right, first answer is Vaishnavi Pandey, Lord Mountbatten. Priya Arora says Lord Mountbatten. Fairy Tale says Louis Mountbatten. Sonia Gandhi. Louis Francis Albert विक्टर निकोलस माउंटबैटन. सोनिया गांधी, आपने कोई नाम छोड़ा है इंग्लिश वोकैबुलरी में? सारे नाम आपने लिख दिए हैं, सिर्फ जॉन को भूल गए आप. जॉन, जेम्स, विलियम, 3 नाम आप भूल गए, बाकी सारे आपने लिख दिए हैं. सोनिया गांधी. क्वाइट फनी. यस, प्रिया अरोरा, योर आंसर वाज डिस्प्लेड and your name was also displayed. No, Priya Arora, your name came after Vaishnavi. You're number 2, Priya Arora. Vaishnavi was the first one, followed by Priya Arora. I'm displaying the names again. Maybe I can enlarge the names so that you can see easily. ठीक है, मैंने नाम जो दिखाई देते हैं स्क्रीन पे मैंने बड़े कर दिए हैं, सो यू कैन इजीली सी देम. सो फर्स्ट आंसर वाज फ्रॉम इन दिस राउंड वाज फ्रॉम वैष्णवी पांडे. वैष्णवी पांडे, आपका नाम स्क्रीन पे है. अब हम चेक करेंगे ये आंसर सही है कि नहीं. द फुल नेम ऑफ माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन. आपका आंसर एकदम सही है. लॉर्ड माउंटबेटन आपने बोला है. उनको लॉर्ड माउंटबेटन ही बोला जाता था, पर उनका नाम जो फर्स्ट नाम था वो था अर्ल माउंटबेटन. एंड ही वाज आल्सो नोन एज अर्ल ऑफ भूटान. उनकी पोस्टिंग पहले भूटान बर्मा में थी, नॉट इन भूटान, बर्मा में थी, अर्ल ऑफ बर्मा. उसके बाद स्पेशली उनको इंडिया भेजा गया सो दैट यहाँ के आज़ादी के बाद पावर का ट्रांजिशन वो जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उसको कर सके. 1947 में इनको स्पेशली यहाँ पे वॉइस रॉय बना के भेजा गया था. इनका नाम था अर्ल माउंटबेटन. सो इनको लॉर्ड माउंटबेटन भी बोला जाता है, ज़्यादा पॉपुलर नाम है उनका. वैष्णवी, आपने सही आंसर दिया है. क्योंकि अर्ल माउंटबेटन किसी ने कहा नहीं है और सोनिया गांधी ने भी अर्ल नाम भूल गई हैं. सॉरी सोनिया गांधी, यू ऑल्सो मिस्ड अर्ल. जेम्स, विलियम,
के अलावा अर्ल भी भूल गई हैं। तो सोनिया गांधी आपका जो नाम जो आंसर है वो काफ़ी बाद में आया है, तो वी हैव टू गिव इट टू वैष्णवी पांडे, शी वाज द फर्स्ट वन। वैष्णवी पांडे, आपका आंसर एकदम सही है, यू हैव वन दिस राउंड। In the year 1962, who was the first American to orbit the Earth? And he did this deed in a spaceship known as Friendship 7. 1962 में वो कौन से अमेरिकन हैं जिन्होंने धरती का पहली दफ़ा चक्कर लगाया, और उनके स्पेसशिप का नाम था फ्रेंडशिप 7. Remember friends, this is not about first human, this is about first American. So I'm just clarifying this. Make sure that your answer is perfect. पूरा नाम बताना है। 1962 में वो कौन से पहले अमेरिकन हुए जिन्होंने धरती का चक्कर लगाया, और उनके स्पेसशिप का नाम था फ्रेंडशिप 7। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में दोनों में रिपीट कर रहे हैं हम, सो दैट जिन लोगों को हिंदी या उर्दू में कोई देख रहा है तो उनको समझ में आ जाए इस क्वेश्चन को। 1962 में वो पहले अमेरिकन कौन थे, उनका नाम बताना है, जिन्होंने धरती का स्पेस में चक्कर लगाया, और उनके स्पेसशिप का नाम था फ्रेंडशिप 7। All right, Priya Arora says John Glenn. Fairy Tale says John H. Glenn. Sonia Gandhi says John H. Glenn. Vaishnavi says John H. Glenn. Priya Arora again modifies to John H. Glenn. All right. Well, Sonia Gandhi, उनका नाम एस्ट्रोनॉट नहीं है. His astronaut is a person who goes into space. So हम आपके आंसर में जॉन एच ग्लेन ही लिखेंगे. एस्ट्रोनॉट तो वर्ब हो जाता है, एक नाउन नहीं रहता है. Yeah, Priya Arora, you have corrected, but that correction also brings you down in the list. Okay, Sonia Gandhi says John Herschel Glenn Jr. All right, Sonia Gandhi. All right, I will display the first. You know, in this question, the competition is very, very close. We have to go with the person who has given the complete answer. Vaishnavi Pandey also says John Herschel Glenn Jr. Yes, Sonia Gandhi. So I will display Priya Arora. Okay, so before I go forward, Priya Arora has asked a question. Correct answer matters. Obviously, you see Priya Arora, the entire list have the correct answer. Everybody has given the correct answer. You see, everybody has given the same name. So there are three conditions, Priya Arora. I have told you in the beginning. One was you have to give the answer. You should be the first one to give the correct answer. That means answer has to be correct. You should be higher in the list. And the third is that your answer must be complete. So when the competition is so close, we have to go to the first complete answer. All right. Nevertheless, Priya Arora, your name is on the screen, and hopefully I have clarified the doubt. We will check if this answer is right. It is John Glenn, and the first complete answer has been given by first complete, fully elongated person's name. Answer has been given by Sonia Gandhi. Sonia Gandhi says John Herschel Glenn Jr. So we have to give credit to Sonia Gandhi because she has taken all the pains in identifying the full name of this gentleman who went around, first American who went around the earth in space in a spacecraft called Friendship 7. So unfortunately, Priya Arora, you were quick. However, there were people who actually took a lot of pains in giving the complete name of this gentleman. And this is a competition. This is what we are talking about. The answers are not difficult, but how you present it matters, and that will make victory for you. All right, so Sonia Gandhi, you have won this round because you are the first one to give the complete name, which is John Herschel Glenn Jr.
Yes, Priya Arora. I'm not sure what you're saying, but let's nevertheless move to the next question. Uh, in 2013, which was the first country to establish a national system of fast chargers of electric cars? 2013 में वो दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने एक पूरा नेटवर्क अपने देश में बनाया फॉर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स? आपको आपको नाम बताना है इस देश का, एंड डोंट प्रोवाइड बैकग्राउंड फोरग्राउंड ऑल दैट. आपको सिर्फ इस देश का नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है. इस देश में जिसने सबसे पहले दुनिया में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग का नेटवर्क क्रिएट किया. You know, in India, we are still, we do not have electric charging network. Even in the US, it is not there. US electric car charging network is present between only in Silicon Valley and to some extent in LA. So there is a country which has been able to establish the car charging network of car chargers for the very first time in 2013. इस देश का नाम बताना है. Okay, Fairy Tale says Estonia. Fairy Tale, आपका नाम स्क्रीन पे है. Followed by Priya Arora, she says China. Mahinder says Japan. Mahinder, your name is on the screen. Sonia Gandhi says Sweden. कोई और इसमें अपना जोर आजमाना चाहते हैं? किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? 2013 में वो कौन सा देश है दुनिया में जिसने पहली दफा अपने देश में, अपने कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क क्रिएट किया? ऑलराइट, 4 आंसर आए हैं हमारे पास. थोड़ा वेट करें या मूव ऑन करें? ऑलराइट, Sonia Gandhi then says US. ठीक है, अब मैं फेरी टेल का आंसर डिस्प्ले करता हूं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था. फेरी टेल, आपका नाम स्क्रीन पे है. वी विल चेक इफ दिस आंसर इज करेक्ट. बिल्कुल सही फेरी टेल. एस्टोनिया इज द राइट आंसर. एस्टोनिया इज अ स्मॉल नेशन इन द बाल्टिक रीजन. Estonia is a small nation in the Baltic region which was able to establish world first network of electric car charging stations in their country. It is a country which became independent after USSR broke up, and Estonia is in the neighborhood of other Baltic nations which are known as Lithuania, Latvia, Estonia. These are known as Baltic nations which were all part of the USSR, became independent in 91-92 frame. Priya Arora, your answer, both answers, which is China and US, are not right. Even I have told you that US is a very large country, 3 times the size of India, and they definitely do not have countrywide network of electric charging stations. They have to some extent in the Silicon Valley area where there are multiple network electric charging stations for cars, and across the highway which connects SFO with LA, and to some extent there is a coverage and also some part of LA. They do not have countrywide network, and definitely China do not have countrywide network. Estonia is the answer. Fairy Tale nailed it. She was the first one to give the answer, and yes, but Fairy Tale answer is correct. Vaishnavi Pandey, बाकी सारे आंसर गलत हैं. जापान obviously do not have electric because Japan relies on the bullet train concept. They do not believe in owning too many personal cars. All right. Yeah, so Europe is not everywhere is leading, Priya Arora. It's the France is nowhere near the picture. Spain is nowhere near the picture. Portugal is definitely below the poverty line. In fact, Italy, Spain, Portugal, and I think one more country, they were known as pigs in European Union. So they are much below the normal line.
However, the Northern European guys are doing much more activities in the EV area, including the Switzerland. So North Europe is definitely ahead, but Estonia is the fastest of all of them. All right, let's move. Let's see if we have more questions left for today. So we have come to the end of our quiz, guys, and I will take few seconds to compile the data and come back to you with the result. Meanwhile, continue to participate in the lucky draw because this contest is still open. You can win Angels rating worth 1000 rupees, so don't miss out, friends. All right, friends, hold on, and I will be joining back very soon. All right, guys. So I am back, and Priya Arora, let's move on because today we have a very interesting result. You'll still get chance to prove your metal, Priya Arora. Don't be too much worried. All right. So first of all, I will take the name of all those people who participated. Priya Arora, Vaishnavi Pandey, Sonia Gandhi, Fairy Tale, and Mahendra. A round of applause for all of you for participating in this quiz. All right. As I always say, participation is everything because if you participate, you can win. But if you do not participate, there's no question of winning or losing. But if you win today, you will get free Oracle reading, which is worth 400 rupees. Even if you lose, come back tomorrow, be very quick, give the right answer, and you can win tomorrow. So keep participating, friends. That is very important. Now, we have a very interesting result. And there is a huge competition among our guests today. And there is a tie, but the tie is not between 2 people, 3 people. The tie is in among 4 people now. We have Priya Arora with a score 1. Vaishnavi Pandey, her score is 2. Sonia Gandhi is also having 1 score. And Fairy Tale has a score of 1. आपने 4 क्वेश्चंस हुए थे, 4 राउंड हुए थे, चारों ने एक एक राउंड जीता है. तो आप चारों के बीच में टाई ब्रेकर है. अब हम टाई ब्रेकर का क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे और टाई ब्रेकर में भी हमारे जो क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा कि आपको पूरा नाम देना है, आपको सबसे पहले आंसर देना है, मतलब आपका आंसर सबसे पहले जो सही जवाब आएगा वो माना जाएगा और ऑब्वियसली आपका आंसर करेक्ट भी होना चाहिए. तो सबसे पहले करेक्ट एंड कंप्लीट, ये तीनों क्राइटेरिया हैं. आप चारों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा. आप चारों के नाम हैं प्रिया अरोरा, वैष्णवी पांडे, सोनिया गांधी एंड फेरी टेल. प्लीज से इफ यू आर प्रेजेंट. सोनिया गांधी इज ऑलरेडी सेइंग दैट शी इज प्रेजेंट इन द हाउस. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? प्रिया अरोरा, वैष्णवी पांडे, फेरी टेल, आप प्रेजेंट हैं? मूव ऑन प्रिया अरोरा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन. आपका स्कोर 1 है. यू हैव बीन गिवन क्रेडिट टू वन ऑफ द आंसर. प्लीज मूव ऑन. यू कैन विन द टाई ब्रेकर. प्रिया अरोरा. Okay, so Priya Arora, you are present in the house. What about Vaishnavi Pandey and Fairy Tale? Fairy Tale is present. Vaishnavi Pandey, are you there? ऑल राइट. सो वैष्णवी पांडे, अगर आप हैं तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है. ये टाई ब्रेकर है. सबसे पहले सही जवाब देना है, कंप्लीट जवाब देना है. ये टाई ब्रेकर का क्वेश्चन है आप चारों के लिए. प्रिया अरोरा, वैष्णवी पांडे, सोनिया गांधी एंड फेरी टेल. मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करने जा रहा हूं स्क्रीन पे.
In 2017, what is the name of newly discovered and new and mostly underwater continent in the South Pacific, announced in the GSA Today, in a journal called GSA Today? वैष्णवी पांडे, आप हैं, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले आपको सही जवाब देना है। 2017 में उस कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जो नया कॉन्टिनेंट हाल ही में खोजा गया है, इसका नाम बताना है। एक नया कॉन्टिनेंट हमारे दुनिया में खोजा गया है जो पानी के अंदर है, पैसिफिक के नीचे डूबा हुआ है, कंप्लीटली अंडर वाटर। 2017 में इसकी खोज हुई, इसका अनाउंसमेंट जीएसए टुडे नाम के जर्नल में किया गया। इसका आपको नाम बताना है, सबसे पहले सही जवाब देना है। अभी तक हम जानते हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन अब 8th की भी खोज की गई है जो पूरा पानी के अंदर है, डूबा हुआ है, और इसकी खोज 2017 में हुई है। इसका अनाउंसमेंट जीएसए टुडे नाम के जर्नल में किया गया था। फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम फेरी टेल। फेरी टेल, योर नेम इज ऑन द स्क्रीन, यू आर सेइंग जीलैंडिया। प्रिया अरोरा सेइंग जीलैंडिया, नंबर 2 प्रिया अरोरा, आपका आंसर नंबर 2 है। वैष्णवी नंबर 3 है जीलैंडिया। सोनिया गांधी का आंसर नहीं आया है, सोनिया गांधी आई एम वेटिंग। Okay. Sonia Gandhi also says Zealandia. Yes, Priya Aurora, I've already said it's the 8th continent. मैंने क्वेश्चन में ही ये रिपीट किया है कि वो 8th कॉन्टिनेंट है, उसका नाम बताना था। फेरी टेल, फेरी टेल, आपका आंसर सबसे पहले आया है चारों कंटेस्टेंट के अंदर, और हम देखेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही, जीलैंडिया इज द आंसर विच वाज 8th continent. However, the continent is completely submerged under ocean. Therefore, the man did not know there is a 8th continent that exists on Earth, and there is no landmass. It is actually another continent submerged in the Pacific. Therefore, fairy tale ने ये क्विज जीत ली है। उन्होंने टाई ब्रेकर में सबसे पहले जवाब दिया है फेरी टेल। आपका आंसर एकदम सही है, एंड आप सबसे ज़्यादा क्विक साबित हुए सारे कंटेस्टेंट्स के अंदर, और you deserve the free reading of Oracle which we have promised, and you have won this fairy tale. So great job, and round of applause for fairy tale. So fairy tale, when we return, the free Oracle reading worth 400 rupees will be done for you. All the best.